Greetings everyone. Welcome back to Geeks for Geeks School. Let's continue our course of C programming. Part 17. In this video, we're going to learn about for loop. So let's begin. Imagine if you want to do a task multiple number of times, or you want to print a statement multiple number of times, then you have to use loops. So loops are used to iterate over a block of code several times. अब ये जो लूप्स होते हैं ये क्या होते हैं कि एक ही पीस ऑफ कोड जो है उसको सेवरल टाइम्स रिपीट करता है. लाइक एक पीस ऑफ कोड है हमारा और वो हमने 5 बार रिपीट कराना है. इफ यू वांट टू repeat this particular piece of code 5 times, then you use loops. Alright, so instead of writing this piece of code 5 times, अब ये तो नहीं है कि आप 5 बार सारा का सारा कोड जो है दोबारा रिपीट करोगे. नो, टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टू सेव टाइम, लूप्स आर यूज्ड. ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है हेलो वर्ल्ड, और वो भी 6 टाइम्स प्रिंट करनी है इन सिंपल टर्म्स, देन यू हैव टू यूज printf स्टेटमेंट्स हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. ऑलराइट, if you want to print hello world 6 times, then you have to use printf statement 6 times. But for loop removes this redundancy of writing this printf statement 6 times. It can only be written in a single line of code and it can print the whole statement 6 times. Okay, so let us see the syntax. Here is the syntax. अब जो for loop होता है उसका syntax ऐसे होता है. First is the keyword that is of for loop. Then braces, curved braces, and then initialization. This is where you initialize a variable. For example, I equals to 0 or I equals to 1 or anything that you want to give the value to I. Here is the initialization part. I equals to 0. That is, first we have initialized I as 0. Then is the test expression. Here we check the condition that we give to the for loop, like how many times you want the loop to iterate. यहाँ पे जो कंडीशन आती है वो डिसाइड करती है कि जो आपका लूप है वो कितनी बार रन करेगा. 6 टाइम्स, 10 टाइम्स और एनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू वांट. अंडरस्टूड? ये अपडेट एक्सप्रेशन है. इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा वेरिएबल है जो यहाँ पे इनिशियलाइज कराया है, that will be updated. It could be increment or it could be decrement or it could be anything that you want to do. It could be division, that you want to update the value of I by dividing it by 2, or it could be multiplication. That is, if you want to update the value of I by multiplying each time with the number 2. This is the update expression. The body of the loop is here. This is the piece of code that you want to repeat, right? For loop will repeat everything that is present inside the body of the loop. So इसका flow chart कैसे होता है? First is initialization, then it will check the test expression. पहले इनिशियलाइजेशन होगी कोई भी वेरिएबल की, देन इट विल चेक कि जो कंडीशन हमने दी है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. देन इट विल मूव टू द कोड जो फॉर लूप के अंदर प्रेजेंट है. इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू और सेटिस्फाइड. ऑलराइट, जब ये कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन इट विल गो टू द अपडेट. जब कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तब क्या करेगा, ये द वेरिएबल अपडेट कर देगा. यानी कि अगर हमारा इनिशियली वेरिएबल i इक्वल्स टू 0 था, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन आफ्टर कोड एग्जीक्यूशन इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ i टू i इक्वल्स टू 1 इफ अपडेशन इज i प्लस प्लस. सिमिलरली अगर i हमारा इनिशियली 2 होता और हमारी अपडेशन एक्सप्रेशन जो है वो माइनस माइनस होती, तो आफ्टर कोड एग्जीक्यूशन अपडेट होने के बाद क्या हो जाती है i की वैल्यू 1.
डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जब अपडेट हो गई है देन दोबारा क्या करेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा, फिर से कोड एग्जीक्यूट करेगा अगर वो सेटिस्फाई हो रही है, फिर अपडेट करेगा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद, फिर दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा, ऐसे कोड रिपीट होता जाएगा। नाउ अगर ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है कहीं जाके फॉल्स हो जाती है और नॉट सेटिस्फाई आ जाता है, then what will happen, it will terminate the for loop। अगर false हो जाती है टेस्ट एक्सप्रेशन तब ये for loop एग्जिट हो जाए। नाउ अब जो हमारा एग्जांपल जहां पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, कैसे करना है अब वो, दिस इज द कोड। कैसे होगा, इनिशियली हमने आई की वैल्यू क्या सेट की है, 0। देन कंडीशन स्टेटमेंट हमारी क्या है, रिमेंबर दिस कंडीशन स्टेटमेंट, आई इज लेस देन 6। ओके, इज आई लेस देन 6, यस, तो जो फॉर लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, दैट इज हेलो वर्ल्ड फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अपडेट कर देगा वैल्यू, हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है, देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन सेज आई इज लेस देन 6, क्या आई लेस देन 6 है यहां पे, यस इट इज लेस देन 6, अगेन इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इट विल अगेन update the value and it will become I equals to 2. Is test expression satisfied, I less than 6, yes it is satisfied, so it will again execute the code, and similarly it will go up to I equals to 5. Is 5 less than 6, yes it will again print hello world. Now the important point, after this execution it will update the value as I equals to 6. Now is I less than 6, no, this condition is not satisfied because I is equal to 6, so this time the for loop will not go inside the body, hello world will not be printed, so it will end the for loop. Understood? Now what will be the output of this code, this hello world will be printed 6 times, and how, here I is 0, I is 1, I is 2, 3, 4 and 5. At I equals to 6 it will not print it. This is how for loop works. Now let us see an example of for loop. Here we have declared a variable, we have not set a value here, instead we have set the value in the initialization expression here, I equals to 1, so the initial value of I is 1, right, and the condition or the test expression is I less than 11. Does the first value of I satisfies this test expression, yes it does, so it will go inside the for loop and it will print the value of I, right, the first value, that is percentage %d because it is an integer, and backslash n, it will move to next line, it will print the value of I, so the first value of I will be printed. What is the first value, 1, so let us write the output here, the first value of I will be printed. Next, after executing this code it will update the value I equals to I plus plus, so after updating what will be the value of I, it is 2. Does it satisfies the test expression, yes it does, so it will again execute the code statement, so it will print the value of I, that is 2 this time. Again it will update the value I equals to 3, satisfies, yes it satisfies, so it will again print it, right. Similarly it will go up to I equals to 10. अब 10 तक जाने के बाद अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है I equals to 10, yes it is satisfying, so it will print the value 10. Again it will again update it I equals to 11, update कर दिया value I equals to 11. Does it satisfies the test expression, no it does not satisfy the test expression, so it will not execute this statement and it will end here.
So it will print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This will be the output and it will terminate the for loop here. Now let us see the results. Here is the result. All the values are printed up till 10. अब अगर बिना for loop के करना होता तो we had to repeat this line 10 times. But here it is simply written in 4 lines of code or 2 lines of code. So it removes the repetition of code. You don't have to write the same code every time you want to execute a particular statement. This is the concept of for loop. Alright, that's it for this video. Stay tuned for further updates. For more information, visit GeeksForGeeks.org. Also, don't forget to visit the GeeksForGeeks school channel where you can find various kinds of courses that are available, such as machine learning courses, Arduino based courses, mathematics for kids courses, Sprite labs and much more to explore from the channel. Do visit.